Hope arose from the horrors of war. For the first time in human history, an institution was created for the entire world. As a founding signatory of the UN Charter, India was part of that noble vision. It reflected India's own philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which sees all creation as a family. Our world today is a better place because of the United Nations. We pay tribute to all those who have advanced the cause of peace and development under the UN flag, including in UN peacekeeping missions, where India has been a leading contributor. However, while much has been achieved, the original mission remains incomplete. And the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequality, and in leveraging digital technologies. The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल इजलास में पाकिस्तान की जानिब से फिर जम्मू कश्मीर का राग अलापा गया। जम्मू कश्मीर के नाम पर दुनिया में झूठ और गुमराही फैलाने की पाकिस्तान की सारी कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गईं जब हिंदुस्तान की तरफ से बैक टू बैक पाकिस्तान को आईना दिखाया गया और दुनिया को याद दिलाया गया कि आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के नतीजे में ही मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगा रखी है और FATF जिंदा मिसाल है। Yet again, though we are not surprised, Pakistan has twice chosen to divert the attention of the Council with its imposterous political propaganda, full of disinformation and gratuitous references about India's internal matters today. It will be better for Pakistan to set its own house in order before it speaks about others. Mr. Vice President, just 12 days ago, the OHCHR in its press briefing expressed serious concern about the numerous instances of incitement to violence, online and offline, against journalists and human rights defenders in Pakistan, in particular against women and minorities. Especially worrying are accusations of blasphemy, which can put accused individuals at imminent risk of violence. A week before that, the special procedures of the HRC had called on the Pakistani authorities to end the secret detention of human rights defender Idris Khattak, whose whereabouts are not known for more than 9 months. Talia, the 20-year-old daughter of Idris Khattak, is still waiting for a fair trial for her father. Last week, we saw serious concerns being expressed in this room at the large number of enforced disappearances in Pakistan. Mr. Vice President, human rights defenders in Pakistan are being silenced every day through intimidation, secret detention, torture, and enforced disappearances with the direct involvement of the Pakistani government. Targeting of journalists through threats, assaults, arrests, instilling extreme fear and self-censorship exposes the fallacy of Pakistan's so-called military-run democratic system. Very recently, we saw Marvi Sirmad, a women journalist and human rights defender, receiving highly derogatory and violent messages on social media. Journalists Ahmad Noorani and Gul Bukhari and their families have been receiving death threats daily and live in an atmosphere of constant fear and terror. Abductions continue, often of not only journalists and human rights defenders, but also of underage Hindu and Christian girls. Law enforcement agencies in Gulistan, Khyber Pakhtunkhwa, and Sindh have been given a free hand and are authorized to arbitrarily detain any person, including those below the age of 18 years.
cries of Baluch sister Hasiba Kambrani, for our brothers Hassan and Isbullah Kambrani, who have been forcibly taken away by the Pakistani military, go unheard. This, Mr. Vice President, is a plight of daughters, sisters and mothers in Pakistan. They say in Imran Khan's Naya Pakistan, you may not return home. Mr. Vice President, let me turn to Pakistan occupied parts of Indian Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Cases of enforced disappearances, murders, detentions, custodial deaths and torture of civil rights activists, representatives of local political parties and journalists are common and a standard practice adopted to silence voices against the government and deep state in Gilgit-Baltistan. Mr. President, I take the floor in exercise of right of reply to the statement made by the representative of Pakistan. Our delegation had hoped that during this solemn commemoration of a shared global milestone, the General Assembly would be spared another repetition of the baseless falsehoods that have now become a trademark of Pakistan's interventions on such platforms. However, for a nation that is bereft of milestones, one can only expect a stonewalled and stymied approach to reason, diplomacy, and dialogue. What we heard today is the never-ending fabricated narrative presented by the Pakistani representative about the internal affairs of India. We reject the malicious reference made to the Union Territory of Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. If there is an item that is unfinished on the agenda of the UN, it is that of tackling the scourge of terrorism. Pakistan is a country which is globally recognized as the epicenter of terrorism, which by its own admission harbors and trains terrorists and hails them as martyrs and consistently persecutes its ethnic and religious minorities. It would do well to turn its attention inwards to immediately addressing these pressing concerns instead of diverting attention from them by misusing UN. इधर इस वक्त एक ताइवान से बड़ी खबर ये मिल रही कि ताइवान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा दोनों ने चीन को सीधे तौर पर मुतनब्बा कर दिया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने साफ अंदाज में कहा, चीन को सीधे तौर पर ताइवान के वज़ीर ख़ारजा ने धमकी देते हुए कहा कि हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज न किया जाए, हमें किसी भी अंदाज में किसी भी तरह से कोई तरह तनकीद या किसी तरह का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि ताइवान हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। चीन के हर नापाक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। इसलिए चीन को सीधे तौर पर ताइवान की तरफ से एक साफ मैसेज दिया गया है। वज़ीर दिफा ने भी हमले का जवाब देने की धमकी दी है और वज़ीर दिफा की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमारे पास उतने बहुत काफ़ी मकदार में काफ़ी तादाद में मिसाइल है जिससे हम चीन के हमले का जवाब दे सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के वज़ीर दिफा ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे पास वाफिर तादाद में मिसाइल है जिससे हम चीन की हर हमले को नाकाम बना सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। वहीं ताइवान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि चीन हमारी खुद मुख्तारी को ना चैलेंज करे, चीन हमसे ना भिड़े, हम एक आज़ाद रियासत, आज़ाद मुल्क हैं और हमारी खुद मुख्तारी और हमारे आज़ादी को दबाने या कुचलने की कोशिश का नापाक अंजाम होगा। तो सीधे तौर पर चीन को ताइवान की धमकी दी जा चुकी है। वहीं दूसरी जानिब ताइवान की सदर ने उन जवानों की बहादुरी को सलाम किया है जिन्होंने चीन की तरफ से भेजे गए उस फाइटर जेट को इंटरसेप्ट किया था जो ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तो उनकी भी तारीफ की है। लेकिन इधर वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा दोनों ने चीन को धमकी दी है और कहा है कि हमारे पास हथियार वाफिर तादाद में हैं और हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए सीधे तौर पर तैयार हैं। You understand that Taiwan is not run by China. We elect our own government. Our president is democratically elected. Our parliament is also democratically elected. We have Ministry of Foreign Affairs that engages with the international community. So Taiwan is not run by China. Taiwan is not part of the PRC, and that is the fact. And if you look at the internal situations in China at this moment, their economy has been affected by COVID-19 and also affected by the very serious flood recently, and therefore the whole economic production in China has suffered. And under these kinds of circumstances, maybe the Chinese people will blame their leaders
for the wrongdoings or economic slowdowns in China. And under these kinds of circumstances, the Chinese leaders, the authoritarian leaders, may find Taiwan as a convenient scapegoat. And therefore, Taiwan needs to be doubly concerned about the Chinese possible use of force against us. The Taiwanese people should not be excluded from the international organizations. It's not fair to the Taiwanese people, and it's also stopping Taiwan from making contributions to the international community. So I would ask the international community, I would ask the members of the international organizations to look at Taiwan's role as a positive. इधर हिंदुस्तान और चीन के दरमियानी सरहदी कशीदगी अपने शबाब पर है, लेकिन कल की मीटिंग के बाद इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि आज कोई मीटिंग नहीं होगी। कल 13 घंटे तक के मीटिंग चली थी, कमांडर सतह की मीटिंग चली थी चोसुल माल्डो में, लेकिन आज कोई मीटिंग नहीं होगी ऐसी खबर मिल पा रही है। और आज जो खबर मिल पा रही है कि आज कल की मीटिंग के हवाले से सीनियर हुक्काम को ब्रीफ किया जाएगा। जो चाइना के साथ डिस्कस किए गए थे, जो कल मुज़ाकरात, कल मीटिंग हुई थी, जो बातें हुई थी, कल क्या कुछ निकला, उस मीटिंग से क्या कुछ रास्ते निकले, उन तमाम चीज़ों पर आज सीनियर हुक्काम को ब्रीफ किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के साथ लेफ्टिनेंट जनरल पीजे की मेनन, दोनों की क़यादत में ये कल की मीटिंग हुई थी। और आज जो खबर मिल पा रही है कि आज कोई मीटिंग नहीं होगी, बल्कि कल की मीटिंग के हवाले से आज आला हुकाम को ब्रीफ किया जाएगा। और ब्रीफ के दौरान कल क्या कुछ दोनों मुल्कों के दरमियान मीटिंग में तय पाया, क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले, क्या कुछ रास्ते निकले, इन हवालों से मुमकिन है कि आज ब्रीफ किया जाए आला हुकाम को और फिर आगे की हिकमत अमली तय की जाए। तो आज कोई मीटिंग नहीं होगी ऐसी खबरें मिल पा रही है, लेकिन कल सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक मीटिंग चली। जो मोल्डो का एरिया है वहाँ पर जहाँ मीटिंग हुई और करीब ये 11 से 13 घंटे तक की ये मीटिंग चली। और इस मीटिंग में दोनों मुल्कों ने LAC की जो सूरत हाल है, जो कशीदगी का दौर है और जो इम्कानात है, उन तमाम हवालों से बात की। हिंदुस्तान की तरफ से साफ सुथरे अंदाज में अपनी शायत रख दी गई कि 4 महीने पहले पुराने वाली पोजीशन पर वापस लौटने की कोशिश करे चीन, लेकिन देर रात हमें ज़रा से खबर मिल पाई कि चीन की तरफ से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि वो पेंगोंग हो या हॉट स्प्रिंग हो, इन तमाम इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ज़राए के हवाले से ये खबर हमें रात मिली, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ऑफिशियल ब्रीफ या बयान नहीं जारी किया गया है। लेकिन अभी इस वक्त खबर मिल पा रही है कि आज दोबारा से मीटिंग नहीं होगी, बल्कि आला हुकाम को इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा कल की मीटिंग में क्या कुछ तय पाया है। इधर बहरीन के फरमारवा हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का मुआहदा किसी इदारे या ताकत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका मकसद मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की सरकारी खबर रसां एजेंसी ने काबीना के बयान का हवाला देते हुए कहा कि बहरीन फ़लस्तीन और 2002 के अरब अमन अमल की मुकम्मल हिमायत करता है। फ़लस्तीन के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा गया कि फ़लस्तीनियों के साथ रियासी सतह पर इसराइल से ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता के 1967 जंग में कब्जे में लिए गए इलाकों से इसराइल की मुकम्मल दस्तबरदारी की हिमायत करते हैं। याद रहे कि बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवामा इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए थे और इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाली अव्वलीन अरब रियासतों में से बन गई थी। इधर एक बड़ी खबर आ रही है कनाडा से बड़ी खबर ये मिल रही है कि सऊदी अरब के साथ अब रिश्ते खराब हो सकते हैं, ऐसे इशारे मिल रहे हैं। क्योंकि कनाडा से बड़ी खबर मिल पा रही है कि सऊदी अरब के साथ हथियार को फरोख्त को रोकने का मुतालबा तेज हो गया है। कनाडा में राइट विंग की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया, राइट ग्रुप की तरफ से मुतालबा किया गया है जस्टिन ट्रूडो से कि सऊदी अरब के साथ हथियार के खरीद फरोख्त को बंद किया जाए। और इसके पीछे यमन में जो सऊदी अरब के दरमियान यमन और सऊदी के दरमियान जो जंग है उसका हवाला देते हुए एक दर्जन भर से ज़्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक ख़त लिखा है कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को और कहा है कि सऊदी अरब के साथ हथियार के खरीदो फरोख्त का सिलसिला ख़त्म किया जाए, डील को ख़त्म किया जाए। कैनेडियन लेबर कांग्रेस और लार्जेस्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कनाडा में है
वो साथ ही साथ कुछ कनाडा के यूनिट लार्जेस्ट यूनिट के ने भी मुतालबा किया है कि सऊदी अरब से असला फरोख्त पर रोक लगे और सऊदी अरब को असला बेचने में भी, सऊदी अरब से असला बेचने में, ख़रीदने में, ये तमाम जो एग्रीमेंट्स है इस हवाले से कहीं ना कहीं के मुतालबा किया गया कि इन तमाम एग्रीमेंट को फिलहाल होल्ड पर रखा जाए। यमन के साथ सऊदी अरब की जंग चल रही है, इस जंग को लेकर के जो कनाडा से हथियार खरीदा जा रहा था उस हथियार को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर कनाडा में भी आवाज़ उठने लगी है और कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया गया है कि सऊदी अरब के साथ जो हथियार डील है, वो हथियार बेचने का जो को लेकर जो मुआहदा हुआ है उस मुआहदे को ख़त्म किया जाए और फिलहाल सऊदी अरब के साथ कोई भी असला फरोख्त न किया जाए। तो बड़ी खबर मिल रही है सीधे तौर पर कनाडा से। कनाडा में सऊदी अरब के खिलाफ आवाज़ उठती हुई दिखाई दे रही है। मुमकिन है कि अगर कनाडा की सरकार मुखालिफिन हिज़्ब इख्तिलाफ की बातों को और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को, ऑर्गेनाइजेशन की बातें को मानते हुए सऊदी अरब से डील अगर ख़त्म करते हैं तो फिर सऊदी अरब और कनाडा के रिश्ते में खटाई आ सकती है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने ईरान की वजारत दिफा और उसके जौहरी और रवायती हथियारों के प्रोग्राम से वाबस्ता अफराद पर नई पाबंदियां आयद कर दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने सदर ट्रंप के कौमी सलामती की टीम के दूसरे अरकान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरान के खिलाफ इन नई पाबंदियों का ऐलान किया है। उन्होंने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ भी नई पाबंदियों का ऐलान किया है। उनके खिलाफ ये कदगनें उनके ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात के इल्ज़ाम में आयद की गई हैं। माइक पोम्पियो ने सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि गुज़श्ता करीबन 2 साल के दौरान में तेहरान के बदअनवान ओहदेदार वेनेजुएला के गैर कानूनी निज़ाम के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर असला की पाबंदियों को भी त्याग दिया है। साथ ही साथ उनका कहना था कि हमारे आज के इक़दामात एक इंतबाह हैं और इसको दुनिया भर में सुना जाना चाहिए। Today I will take the first action under this new executive order by sanctioning the Iranian Ministry of Defense and Armed Forces Logistics and Iran's Defense Industries Organization and its director. We're also sanctioning the previous president of Venezuela, Nicolas Maduro. For nearly 2 years, corrupt officials in Tehran have worked with the illegitimate regime in Venezuela to flout the UN arms embargo. Our actions today are a warning that should be heard worldwide. No matter who you are, if you violate the UN arms embargo on Iran, you risk sanctions. We stand ready to respond to future Iranian aggression, and we remain committed to doing our part in the administration's maximum pressure campaign. By these actions, we have made very clear that every member state in the United Nations has a responsibility to enforce these sanctions. That certainly includes the United Kingdom, France, and Germany. We will have every expectation. रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि अमेरिकियों को सिर्फ अपने आइंदा इंतखाबात ही का नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरे मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल का सोचना चाहिए। उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में एक चैनल में एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है और अमेरिका ये बात समझेंगे कि उन्हें न सिर्फ अपने आइंदा 1.5 माह में होने वाले इंतखाबात के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उन्हें इस खित्ते के मुस्तक़बिल का भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अहम खित्तों में से एक है। सरगई लावरोफ ने इस खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि शाम से मुतल्लिक़ कुर्द बागियों से मुतल्लिक़ अमेरिका की खारजा पॉलिसी के सवाल के जवाब में कहा कि वो तो शामी अरब जमहूरिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपने इत्तेहादी तुर्की के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी को अपने मकासद के लिए तेल निकालने की गर्ज से लाने के फैसले पर खित्ते के बहुत से ममालिक चौकन्ना हो गए। ये इक़दाम करते वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 2254 के तकाज़ों के मुताबिक शामी अरब जमहूरिया की इलाकाई सालमियत के एहतराम को मलहूज़ न रखा गया। इधर सऊदी अरब से बड़ी खबर यह मिल रही है कि सऊदी अरब के वज़ीर हज उम्रा मोहम्मद सालेह बिन तैन ने कहा है कि उनका मुल्क हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी के साथ उम्रा बतदरीज बहाल करने वाला है। उम्रा प्रोग्राम को यादगार और आसान तर बनाने से मुतल्लिक़ उम्रा फोरम में इजहार ख्याल करते हुए सऊदी वज़ीर हज उम्रा ने आइंदा मरहले में उम्रा व ज़ियारत के मरहलेवार बहाली की तफसीलात बयान की है। उनका कहना था कि आइंदा मरहले में उम्रा की कार्रवाई के सिलसिले में जदीद टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार किया जाएगा, ताकि उम्रा कंपनियां और इदारे अंदरून और बैरून मुल्क में उम्रा पैकेज जदीद शक्ल में मुतारफ़ करा सकें।
उन्होंने मज़ीद कहा कि वजारत एक ऐप जारी करेगी। उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद उसके ज़रिए अपनी आसानी को पेश नज़र रखते हुए उम्रा अदा करने की तारीख और वक्त का तयन करेंगे। इधर लेबनान के सदर मिशेल ऑन ने कहा कि अगर फौरी तौर पर मुल्क में हुकूमत कायम न हुई तो मुल्क दोज़ख बन जाएगा। सदर ने काबीना में फ़िरक़े की बुनियाद पर कोटा ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी है। लेबनानी सदर का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता माह दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले खौफनाक धमाके के बाद पता चला कि अब तक के कुछ सामने नहीं आ सका। धमाके के बाद लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म हसन दियाब मुस्तफ़ा हो गए थे, जिसके बाद मुस्तफ़ा अदीब को नया वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया गया था, जो अपनी काबीना तश्कील देने के लिए कोशा है। सरकारी टीवी पर नशर होने वाले अपने खुसूसी खिताब में लेबनानी सदर ने कहा कि हुकूमत साजी के मामलात पर बढ़ते हुए इख्तलाफात के बाइस फौरी तौर पर मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा। लेबनानी सदर से सवाल हुआ कि मुख्तलिफ धड़ों के माबैन इत्तफ़ाक़ राय न होने की सूरत में उनके नज़दीक हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं। मिशेल ऑन ने जवाब दिया कि यकीनन जहन्नम की जानिब बढ़ रहे हैं। लेबनान को 1970 की दहाई के बाद बदतरीन माशी बहरान का सामना है। इधर यूरोपीय यूनियन ने लीबिया के लिए हथियारों के फरोख्त पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई हैं, जिनमें तुर्की, कजाकिस्तान और उर्दून की कंपनियां शामिल हैं। जबकि तुर्की ने इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। खबरों के मुताबिक बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसल्स में होने वाले यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में तय किया गया है कि उन कंपनियों के यूरोपीय यूनियन में मौजूद असासों को मुंजमद किया जाएगा, यूरोपीय यूनियन के फाइनेंस मार्केट से अलहदा किया जाएगा और उनको यूरोपीय ब्लॉक में किसी मुल्क के साथ कारोबार करने से रोका जाएगा। ताहम तुर्क कंपनी पर पाबंदी लगाने से मशरिक़ी बहर रूम में यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान जारी कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि तुर्क कंपनी और एशिया शिपिंग के एक जहाज़ का नाम सरकन है, जिसने मई और जून में हथियारों पर पाबंदी के बावजूद लीबिया के लिए फौजी साजो सामान पहुंचाया। तो इसी के साथ आलमी खबरों का एक खास बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। रहमत करीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।